We all are in good phase of cold weather and winter comes with lot of care demand. So in this video, I will share my care process for my home and family, which comes with eating habits, skin and hair care, and of course the health care. Today is a holiday, which is a long weekend. On Monday, we faced a snowstorm. Kids were playing out in snow and surely they will need a hot and warm drink once they enter inside. I checked my refrigerator and see कि जो भी वेजीज थी वो सारी रन आउट होने वाली थी. सो आई थॉट कि चलो एक मिक्स वेज सूप बनाते हैं. रेसिपी इज़ रियली सिंपल एंड ईजी टू फॉलो. जो भी वेजिस थे मेरे पास, जो भी मुझे यूज़ करने थे, उनको मैंने इस तरीके से शैलो फ्राई किया है. आई यूज़ दिस कास्ट आयरन पैन बट इट कैन बी यूज़ इन अ ओवन एज वेल. वो भी बहुत सिंपल है. उसमें सारी चीज़ें हमें डालनी है और उसके बाद उसको टेंडर होने के लिए रख देना है. तो इसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ ग्रीन पेपर, अनियन, टमेटोज़ एंड थोड़े से गार्लिक. तो अभी मेरे पास यही वेजीज थी तो मैं इन्हीं को यूज़ करूँगी. थोड़े से मेरे पास ब्रोकली भी हैं, उनको मैं थोड़ा सा स्टीम कर लूँगी सॉफ्टन होने के लिए और उसके बाद इन सब का हम एक प्योरे बनाएंगे. जो भी वेजीज यूज़ करनी है उसको ऐड करने के बाद थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और अपने पैन को कवर कर देंगे. कुछ 15-20 मिनट्स लगेंगे जब तक हमारी वेजीज जो हैं वो टेंडर हो जाएंगी. बीच में ज़रूर ओपन करके चेक करना है अगर वेजीज जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं या नहीं, और अगर वो सॉफ्ट हो जाएंगी तो हम उसको कूल डाउन होने के लिए रख देंगे बिफोर इट गोज़ टू द स्मूथ पेस्ट. दे लुक रियली टेंडर, काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी हैं. अब गैस ऑफ करने के बाद इस वेजीज को हमें कूल डाउन करना है और उसके बाद हमें इसको किसी भी ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड करना है टू मेक अ स्मूदी. बट रिमेंबर, बिफोर मेकिंग अ स्मूदी हमने जो गार्लिक्स डाले थे ना वो पील के साथ ही डाले थे, तो उसके बाद वो टेंडर होने के बाद बहुत इजीली आउट हो जाएंगे. तो हमें गार्लिक की जो पील है उसको ज़रूर निकालना है और सिर्फ गार्लिक क्लोव जो है वो ही जाएंगे ब्लेंडर में. आई वॉज लुकिंग फॉर माई स्टीमर टू कुक माई ब्रोकली बट वो मुझे नहीं मिला. तो आई थॉट कि लेट्स यूज़ दिस कास्ट आयरन पैन टू कुक इट दैम. एंड उसके बाद जब ये टेंडर हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा तो ब्लेंडर में ऐड हो जाएगा ऑल अलॉन्ग विद अदर वेजीज. तो स्मूदी बनने के बाद सूप का जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस तरीके से रहती है. और उसके बाद कुछ आते हैं इसमें स्पाइसेस, क्योंकि बच्चों को भी खाना है तो मैं इसमें इन्वॉल्व करने वाली हूँ सम ब्लैक पेपर एंड इटालियन हर्ब्स. इट कुड बी यूज इटालियन सीजनिंग और अदर सीजनिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर टेस्ट. सूप में कोकोनट मिल्क, क्रीम या फिर रेगुलर मिल्क ऐड करना ऑप्शनल होता है. मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, कंसिस्टेंसी उसकी काफ़ी अच्छी थी तो मुझे लगा कि मैं इसमें ऐड नहीं करती हूँ. लेकिन अगर टेस्ट इन्हेंस करना है तो वी कैन गो फॉर एनी सच क्रीम. आप लोगों ने टमाटो सूप, क्रीमी टमाटो सूप तो ज़रूर खाया होगा, ज़रूर ट्राई किया होगा. अगेन वो बहुत डिलीशियस होता है. यहाँ पर एक पनीरा ब्रेड है विच इज़ फूड चेन, वहाँ पर मिलता है ब्रेड पीस और दिस क्रीमी टमाटो सूप. बहुत हैवी होता है, बहुत डिलीशियस होता है. लाइक हाफ बोल में ना यू आर डन, बट टेस्ट के चक्कर में पूरा बोल आराम से फिनिश हो जाता है. Last night I made til ke laddu for this winter season. The recipe I follow is very easy and amazing in taste. I just dry roast the sesame seeds in a pan on a low flame until they are aromatic or light golden brown.
I am making til gur laddu, so I am using this jaggery. Melt the jaggery through a pan on a heat or easy way to melt it on microwave for about a minute. इससे ना काफ़ी काम इजी हो जाता है और उसके बाद जैगरी जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी, तो उसके बाद हम उसको कट डाउन कर सकते हैं छोटे छोटे पीसेस में बिफोर इट गो टू द ब्लेंडर। जैगरी काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है और उसके बाद आराम से उसमें पीसेस हो जाते हैं। उसके बाद हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। ऐड अ स्पून ऑफ घी इन द ब्लेंडर एंड ऐड द मेल्टेड जैगरी, रोस्टेड एंड कूल्ड सेसमे सीड। इसमें ना रोस्टेड पीनट्स भी जा सकते हैं अपने टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, लेकिन आज हम लोग को सिर्फ और सिर्फ तिल गुड़ के लड्डू बनाने थे तो हमने पीनट्स नहीं डाला है, स्किप कर दिया। बट अगेन पीनट्स भी सर्दियों में बहुत अच्छा एक सब्स्टिट्यूट है और वो टेस्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो वो सब उसमें ऐड कर सकते हो अगर पीनट्स भी हैं तो सबको कंबाइन करके ब्लेंडर में डालने के बाद इसको हमें ना पल्स मोड पे करना है, क्योंकि हमें एक कोर्स पाउडर बनाना है, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो तिल गुड़ मिक्स इज़ रेडी, काफ़ी कोर्स बना है ये, और इसमें हम ऐड करेंगे कार्डमम पाउडर। थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है अगर हम उसको सेसमी सीड के साथ जब कंबाइन करते हैं, तो जैसे गजक वगैरह में भी होता है। तो जो भी हमारे पास अगर पाउडर है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उसको ग्राइंड करके भी कार्डमम को इसमें ऐड कर सकते हैं। ग्रीन कार्डमम हमें यूज़ करनी है। नाउ टाइम टू शेप द लड्डू। व्हेन द मिक्सचर इज स्लाइटली वार्म, स्टोर देम इन अ एयर टाइट जार और कंटेनर इफ़ द क्वांटिटी इज़ क्वाइट बिग। लेकिन अगर छोटी मोटी क्वांटिटी है तो छोटे मोटे बोल में भी रखकर हम इसको 2 दिन में यूज़ कर सकते हैं एंड एन्जॉय दिस डिलीशियस डिश ड्यूरिंग दिस विंटर सीजन। Whole day we are drinking a lukewarm water because of the winter season. Boil the water or make it hot is not a big task. It takes hardly a minute or two. The hard part is to maintain the temperature of hot water in this time. So I prefer to use the coffee pot to maintain the water temperature entire day. Sometimes I just add a spoon of coffee powder into that coffee pot and add milk and sugar whenever we feel like to have coffee or caffeine. Because the pot is good for temperature retention due to the double-walled steel vacuum insulation, and it is a leak-proof, so no tension for the liquid temperature. Since we are using this one multiple times in a day, so the piece is handy and should be the user-friendly. The opening and the closing is really easy with a wide top, and with this the cleaning is so easy, and we can add a big piece of ice cubes when it is needed, because it is a good for cold temperature as well. So this kind of pieces are really good for daily use, office parties, camping or picnic, or even travel because of the 100% satisfaction. Similarly, I prefer to give a stainless steel vacuum insulated water bottle for my kids, because everyone knows that we should avoid that dangerous plastic water bottle for our family health. First of all, they don't maintain the temperature, and the second one, plastic is not good for health. So we are using these insulated water bottle for them. So I bought these 2 different bottles from different brands with different color, and they work pretty well. The alpha kids are not working on their hydration only. They want some styling element whenever they go. So we were looking for a new water bottle for them, as the old one need a replacement. So they were looking for something stylish, handy, good capacity and good color. So in this case, these bottle can be a fashion statement for them. But being a mom or parent, I just need to make sure that our main purpose of having bottle is solving well. We need a sleek body with a handle to grip it well. The bottles are having 2 opening options: flip straw with dust cap for a sip and push button jug lid for gulping the liquid. Bottles are spill free, which is a stress free travel, hydrate the body with the desired temperature, slim steel body which is safe, durable and easy to clean. Good option to go to school travel, gym, shopping or any such travel.
During this snowy weather or a winter, many times we try to avoid hair wash and the result is greasy and smelly hair. Here I have a solution for that smelly hair, that I have started using this hair fragrance, which is equally used for a body fragrance or can be used as a mist. When not in mood to wash your hair, just use this spray directly and evenly on hair from 6 to 8 inches away. Just need to be careful and avoid contact with eyes. It comes with 4 fragrances: coconut pistachios, vanilla cream, dragon fruit and the citrus one. For now I had tried that vanilla cream and you know what? My hair smells like ice cream. The formula of the chemical is no alcohol, avoid dryness or irritation, and there is no burning sensation after use. So easy to use, safe, it is a travel friendly, long lasting fragrance without being heavy. So good option for every day when we are not washing our head during this winter or snowy season. And yes, that can be useful for wigs, fabric and can be a good option to give a Valentine's Day gift, right? Hand cream or oil is playing essential part during this winter or cold. Our hands work a lot during the day and sometimes we forget to make them nourish. But believe me, applying good ointment or good cream 2-3 times in a day make hands good in shape, soft. So this one made by papaya, avocado and beeswax and free from the palm oil, SLS and good for all type of skins. This is a multi-purpose balm which works for cracked, dry skin, sunburn, minor burns or even for the diaper rash. I'm using this balm since couple of months and happy with the result. No intense fragrance it has. So I am using this balm at least 2 or 3 times in a day and keeping that bedside table or in the kitchen because our most of the time goes in these rooms. So whenever we are away for next 15-20 minutes from the water, always apply the cream or oil to avoid any dryness and the cracked skin. So that's all for today's video guys. I hope you like some ideas which could be helpful for you during the winter season. So enjoy the season and keep making lots of warm memories. I'll see you in my next video. Till then, take care and bye for now.